श्रीरुद्रम चमक विभाग 10मो अनुवाकः। हरः ॐ गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयवीश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयोहि च मे पञ्चावीश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्योहि च मे पष्टवाश्च मे पष्टोहि च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहश्च मे अनडवाञ्च मे गेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्। अर्थ: हे रुद्रदेव, આપણી કૃપાથી મને ગર્ભવતી ગાય, વાછરડા, 1.5 વર્ષનો વાછરડો, 1.5 વર્ષની વાછરડી, 2 વર્ષનો વાછરડો, 2 વર્ષની વાછરડી, 2.5 વર્ષનો વાછરડો, 2.5 વર્ષની વાછરડી, 3 વર્ષનો વાછરડો, 3 વર્ષની વાછરડી, 4 વર્ષનો વાછરડો, 4 વર્ષની વાછરડી, સાંડ, વાંઝણી ગાય, પુષ્ટ બળદ, ગર્ભઘાતક ગાય, ગાડી ચલાવનાર બળદ, પ્રસૂતા ગાય, દીર્ઘાયુતા, અમારા યજ્ઞ કર્મથી અમને પ્રાપ્ત થાવ. પ્રાણવાયુ, અપાનવાયુ, વ્યાનવાયુ, ચક્ષુ સામર્થ્ય, શ્રવણ સામર્થ્ય, માનસિક સામર્થ્ય, વાણી સામર્થ્ય, આત્મ સામર્થ્ય, યજ્ઞ અને મહાયજ્ઞ કરવાનું સામર્થ્ય મને મારા યજ્ઞ કર્મથી પ્રાપ્ત થાવ. अर्थ: 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 साल का बछड़ा, 2 साल की ही बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 साल की गाय, 3 साल का बैल, 3 साल की गाय, 3.5 वर्ष का बैल और 3.5 वर्ष की गाय, 4 साल का बैल और 4 साल की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ कर्म के फल स्वरूप मुझे प्राप्त हो. सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नवप्रसूता गाय, ये सब मुझे मेरे यज्ञ कर्म के फल स्वरूप प्राप्त हो. मेरे यज्ञ कर्म से मेरी आयु में वृद्धि हो, यज्ञ कर्म के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हो, नेत्र ज्योति सामर्थ्य मिले, श्रवण सामर्थ्य मिले, वाणी में श्रेष्ठता रहे, मन सदा स्वस्थ रहे, आत्मा बलवान हो, महायज्ञ करने का सामर्थ्य प्राप्त हो, मेरे यज्ञ कर्म के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो. મનના ભાવ 100% છે, ઉચ્ચારણ 19-20 હોઈ શકે તે માટે ક્ષમા. मन के भाव 100% है, उच्चारण 19-20 हो तो क्षमा.